the probability it became the branch of with the same options. A. Physics, B. Chemistry, C. Mathematics, D. Statistics. You have to be thorough with the two words. One is the earlier and another one is later. ठीक है, चलो मार्क करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन बड़ा इंस्टीट्यूट तुम्हें पूछ सकता है. And now let me start with some important terms. Some important terms in which we are going to study about what are the term random experiment. In school days, but we have performed the experiment in which we were sure what will be the outcome, right? In school days, while performing the experiment, that is by writing aim, apparatus, procedure, observation, conclusion. तुम लोग को पहले से पता होता था कि what is going to be the final outcome, right? That is called to be a experiment. But now when we are going to talk about the term random experiment, so random experiment means what? Random experiment means what? An experiment in which all the possible outcomes are known. All the possible outcomes are known, but the exact outcome is unknown. Then such type of experiment, it is called to be as a random experiment. इसका मतलब ये हुआ कि when such type of experiment when it will be performed, तो मुझे पहले से ही पता होगा कि उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे. उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे ये बात मुझे पहले से पता होगी बट वो टोटल आउटकम में से एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा ये बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ random experiment, it can be a tossing of a coin. अब उसके लिए सच में कॉइन को टॉस करने की जरूरत भी नहीं. उसके लिए सच में कॉइन को टॉस करने की भी जरूरत नहीं है. Everyone knows orally when a coin, when it is been tossed, it is going to show how many outcomes. चलो मुझे बताओ when a coin is tossed, it is going to show how many outcomes? 2 outcomes. But which are the 2 outcomes? Correct. One is a heads, another is a tails. But इसमें से exactly outcome क्या होगा वो कोई बता सकता है? इसमें से एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा कोई बता सकता है? नहीं. सेकेंड इज रोलिंग ऑफ अ डाई. अब उसके लिए डाई रोल करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को पहले से पता है
when a die, when it will be rolled, it will show how many outcomes? 6 outcomes. And which are that 6 outcomes? Right. That 6 outcomes, they are 1, 2, 3, 4, 5, 6. बट इसमें से बेटा एग्जैक्टली बेटा क्या होगा आउटकम, कोई बता सकता है? क्या कोई कलयुग का शकुनी मामा है जो बोलेगा बोल भांजे कितना चाहिए, और फिर जो डिमांड करेगा बेटा वो आ जाएगा? बेटा ऑल दिस थिंग्स बेटा दे आर पॉसिबल ओनली बेटा इन टू एरियाज, ओनली इन द टू एरियाज, सिर्फ दो ही जगह पे पॉसिबल है। वन इन द mythological stories, mythological stories. You know what is the meaning of the mythological stories means? Mythological stories means the epics like Ramayana, Mahabharata, Chandrakanta. They are all called to be as mythological stories. And second things are possible only in Hindi movies. जिसमें बड़ा कॉइन को टॉस करते हैं तो वो कॉइन बड़ा सीधा ही खड़ा रहता है, जबकि बड़ा वो प्रैक्टिकली बड़ा ये पॉसिबल ही नहीं है। या फिर जितनी भी बार बड़ा कॉइन टॉस करो वो हमेशा एक ही सेम आउटकम्स दिखाएगा बड़ा, है ना? शोले मूवी देखो बड़ा, शोले अमिताभ बच्चन बड़ा धर्मेंद्र को कैसे बेवकूफ बनाता है। बोथ द साइड्स बड़ा दे आर द सेम साइड्स। अभी लॉकडाउन में तो बड़ा बहुत बार देख लिया होगा ना सब लोग ने शोले बड़ा। Both the sides are the same sides. They use better in the picture. They use better biased coin. जबकि बड़ा in our day to day life बड़ा we use unbiased coin. समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? And the third example is about the selection of a card. अब तुम लोग मुझे बताओ कि in a well shuffle pair there are how many cards? Correct. There are 52 playing cards. When any of the card, when it is been selected randomly, क्या कोई स्टूडेंट एग्जैक्टली बोल सकता है कि वो कार्ड जो सिलेक्ट होगा वो कौन सा कार्ड होगा? अरे हम लोग कार्ड जो है बेटा को देख के थोड़ी सिलेक्ट करते हैं वो बेटा, उसमें तो 52 पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, 52। वो 52 में से बेटा कोई भी कार्ड हो सकता है कि नहीं हो, है कि नहीं? बट कौन सा कार्ड बड़ा एग्जैक्टली होगा ये बताना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। चल आफ्टर कंप्लीटिंग विद द फर्स्ट टर्म which is called to be as random experiment. The second term which we are going to start with, it is called to be as sample space. It is called to be as sample space. Now, what is a sample space?
What is a sample space? A sample space is considered to be as a universal set. Sample space it is considered to be as a universal set. Is considered to be as a universal set which contains all the possible outcomes, which contains all the possible outcomes which are being obtained during the random experiment, which are being obtained during the random experiment. तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि सैंपल स्पेस मीन्स क्या होगा? व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? इट इज अ यूनिवर्सल सेट, राइट? सबसे बड़ा सेट जो सेट होगा इट इज अ सैंपल स्पेस. And this sample space, what it will be comprising of? All the possible outcomes, all the possible outcomes which are been obtained during the random experiment. अब यहाँ पे हम लोग को दो इम्पोर्टेंट सैंपल स्पेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है. वन, it is with respect to the points, and second, it is with respect to the dice. So in that case, chalo, let me start with the first. When a coin is tossed, but when a coin is tossed, that means we are talking about how many coins? चलो फटाफट आंसर दो. We are talking about only how many coins? One coin. And we know that for a single coin, we get the two outcomes, and that two outcomes that we get, that is heads and tails. Heads and tails. And therefore, there is a correction word. Here, there is heads and tails. There is heads and tails. But they are being called to be as sample points. Sample points. और अगर ये वर्ड तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है बड़ा सैंपल पॉइंट्स, तो इन द सिंपल लैंग्वेज इट इज बीन नेम्ड एज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स. एंड यहाँ पे बड़ा देयर इज अ करेक्शन, ये डी ऑफ एस नहीं है, मेक अ चेंज. इट इज एन ऑफ एस. चलो एन ऑफ एस. N of S means it is read as number of sample points. N of S means it is read as number of sample points. They are equal to 2. Nice. When two coins, when they are being tossed, but with respect to 2 coins, it is going to show the 4 outcomes, and that 4 outcomes, it will be HH, HT, TH, and TT. But when I'm using the word HH, तो चल मुझे बताओ what is the meaning of the term HH is? HH means the first coin is showing the head, second coin is showing the head,
अच्छा, what is the meaning of the term T? T means first coin is showing the tail, second coin is also showing the tail. HT means first coin showing the head, second coin showing the tail. And TH means first coin showing the tail and second coin showing the head. समझा बेटा सब लोग को? And therefore n of s it becomes equal to 4. n of s it becomes equal to 4. Acha, what it means? It means that the number of sample points they are equal to 4. Number of sample points they are equal to 4. So everyone should make a note of that. When two coins are tossed or a single coin is tossed for the two times. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को? When two coins are tossed or a single coin it is being tossed for two times, it will give the same result. It will give the same result. इंस्टीट्यूट जो है बड़ा वो बहुत ही चालाक है बड़ा, वो तुम लोग के साथ बड़ा वर्डिंग्स के साथ खेलेगा. तुम लोग बड़ा सब लोग पढ़ के गए होगे कि when two coins are tossed, right? When two coins are tossed, जबकि एग्जाम में बड़ा जो क्वेश्चन है बड़ा वो पूछा जाएगा सिंगल कॉइन इज टॉस बड़ा टू टाइम्स. भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग विल बी वन और द सेम. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, when three coins are tossed, so everyone should make a note bro. For a single coin there were two outcomes, for the two coins there were बड़ा four outcomes. तो यहाँ पे बड़ा बनियागिरी मत करना है, एक का दो, दो का चार, तीन का छः, ऐसा नहीं होता है. थ्री का सिक्स नहीं होता है. फॉर द थ्री कॉइन्स देयर विल बी एट आउटकम्स, एट. एंड फॉर रिमेम्बरिंग that eight outcomes, there will be a trick. Simple sa trick. And what will be the simple ka trick? Okay, first you will have to write all the outcome with respect to three heads. Then you should write all the outcomes with respect to two heads. Then you should write all the outcomes with respect to one head. And then you should write all the outcomes with respect to no heads. मैं क्या बोला सबको समझा? First you should write all the outcomes with respect to three heads, two heads, one heads, no heads. बट टू हेड्स में मेजोरिटी किसका होगा? जल्दी फटाफट आंसर दो. हेड्स का. माइनॉरिटी किसका होगा? टेल्स का.
तो बड़ा अपना उसूल है कि जिसका बड़ा मेजोरिटी है, जिसका मेजोरिटी होगा उसके साथ बड़ा मस्ती नहीं करने का, उसके साथ बड़ा मस्ती नहीं करने का। और माइनॉरिटी हो है उसके साथ मस्ती करेंगे, इसलिए पहले हम लोग बड़ा टेल को घुमाएंगे, टेल पहले जाएगा लास्ट में, फिर आएगा वो बड़ा बीच में, और फिर पहले आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। विद रिस्पेक्ट टू बड़ा वन हेड, मेजोरिटी किसका होगा? टेल्स का बड़ा, इसलिए टेल्स के साथ बड़ा मस्ती नहीं करने का। मस्ती करेंगे हम लोग बड़ा किसके साथ? हेड के साथ। पहले हेड कहाँ पे जाएगा? लास्ट में, फिर बीच में, फिर फर्स्ट में, और उसके बाद बेटा फिर क्या मैंने बताया? नो हेड। नो हेड्स मीन्स इट विल बी टेल टेल टेल। ये ट्रिक सब लोग को अच्छा लगा? भाई ये ट्रिक सब लोग को अच्छा लगा? आगे ना तो बोल। अच्छा लगा तो हाँ बोल, नहीं अच्छा लगा तो ना बोल। चल अच्छा लगा तो अपने पास रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं अच्छा लगा तो टेंशन मत ले, अपने पास दूसरा ट्रिक भी है। ठीक है। We'll write the outcomes in three columns. First column, first four heads, remaining four were tails. Second column, there will be alternate two value head, two value tails. And in the last column, there will be alternate head, tail, head, tail. ये देख शुभ, टेंशन मत ले शुभ। ये देख दूसरा मेथड, अब ये याद करो। ये टेक्निक जो हम लोग ने, मैंने तुम लोग को बताया, ये टेक्निक हम लोग ने कहाँ पे यूज किया था ऐसा? फर्स्ट फोर कॉलम्स एड, रिमेनिंग फोर वैल्यूज। वेरी गुड, याद आया तुम लोग को? याद करो बड़े, जिस किसी भले इंसान ने तुम्हें लॉजिक चैप्टर पढ़ाया था बड़ा 12th स्टैंडर्ड में, लॉजिक सेम ट्रिक था, सेम। हाउस पढ़ा। चल भाई टेंशन नहीं लेने का, कोई भी ट्रिक याद रख, कोई भी का मतलब कोई भी। मेरे को तो बड़ा आंसर से मतलब है, सिर्फ आंसर से।
चल अब मैं तुम लोग का बड़ा यहाँ पे नॉलेज चेक करूंगा कि सपोज बेटा इफ द 4 coins if they are being tossed बेटा 4 coins, तो बताओ with respect to बेटा 4 coins there will be how many outcomes?